which kind of love do you believe in, or do you think? चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया. At some point I think हर लड़की ज़ुबिया से relate कर सकती है, because you would be surprised how many times a girl would have to choose her family over her love. कुछ आपके कंसर्न थे ये मैसेज मैं ना दे दूँ. ज़ुबिया becomes very बदतमीज. तो मैंने कहा कि I don't think this is justified. I don't want to show कि अगर अच्छा बात नहीं मान रहे फैमिली वाले तो आप बदतमीजी शुरू कर दो. My parents were never very willing for me to come to the media side. तो जब इतने सारे लोग कहते हैं पर्ची पर, and I'm just thinking, right, my father is a brigadier, कैसे पर्ची हो सकती है? How is working with खुशहाल? ये मेरा पहली दफ़ा कोई रोमांटिक प्ले. मैंने थोड़ा सा पुश किया बाउंड्रीज को अपनी, और थोड़ा सा I went out of my comfort zone for this character. तो I would not have been comfortable with anybody if it were any other way. सोचें अगर कोई प्रपोज करे तो क्या कुछ जहन में आ रहा होगा, कैसे करें? Not fancy but grand. But I also wanted to be like very intimate, as in like a memory of ours or something that's very emotional, sentimental. A little difficult to pull off, I think. I mean, if somebody wants to get with me, they have to start making notes abhi. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम दानानीर. वालेकुम अस्सलाम. हम कहाँ हैं इस वक्त? हम इस वक्त हैं डाडर, और हम जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम दोनों बैठ के गपशप लगाएं. और सरप्राइजिंग बिकॉज इतनी खूबसूरत जगह है, बट वो एक स्पॉट परफेक्ट मिलना चाहिए. नहीं मिल रहा, सही बात है. लाइट राइट लाइट. यस. और हम दोनों ही बहुत पिकी हैं. और अच्छा, जो हमने जगह चूज की वहाँ तो एक बकरी आ गई है. ओह परफेक्ट. आई एम स्केयर्ड ऑफ बकरी. प्लीज कुछ भी नहीं कहती. लेट्स गो. चलें, हमने देखते हैं वहाँ तक पहुँच. यहाँ से मैं सोची थी यहाँ से चलते हैं. चले. मुझ पे इस वक्त खुशहाल का असर हुआ है ना, थोड़ा एडवेंचरस रहते हैं. So have you gotten a chance to explore the area around you? Not at all. I have been stuck in the guest house for 5 days shooting. Really? Day in, day out. Yeah. This is the first time I'm actually bahar. Look! Oh, hello. I'm not so sure about it. गिर मत जाना. They have tails. Yeah, I'm not that brave. के बाद दूसरा प्रोजेक्ट है आपका. ये बट यू गॉट अ लीड माशाल्लाह से. अल्हम्दुलिल्लाह. सो बीच में काफ़ी स्क्रिप्ट्स आई जिनको मना किया, क्या प्रोसेस था और क्यों नहीं हाँ बोला? द प्रोसेस इज़ एक्चुअली वेरी लेंथी, बिकॉज सबसे पहले तो 2-3 फिल्टर्स हैं फैमिली के, उनके थ्रू जाता है स्क्रिप्ट. ओके. मम्मा रीड्स इट फर्स्ट. तो मुझे जो भी स्क्रिप्ट आता है आई सेंड इट डायरेक्टली टू मम्मा. मम्मा रीड्स इट फर्स्ट. तो पहले आप खुद देखती हो कि अच्छा ये पॉसिबल है, फिर अम्मी को भेजती हो? ऑफ कोर्स, बिकॉज़ लाइक एक कुछ तो होता है ना ऑफ द बैट, लाइक देयर आर सम थिंग्स दैट आई एब्सोल्युटली कैन नॉट डू. तो वो चीज़ें उधर ही आई हैव टू यू नो. तो जो चीज़ मैं कर सकती हूँ, आई एम लाइक ओके मम्मा माइट यू नो, देन आई सेंड हर द स्क्रिप्ट. वो पढ़ती हैं and then she's like, she gives me a go ahead, green signal, red signal. I'm like okay. Or green signal भी, it's not a green signal, it's a yellow signal. Okay. Because the actual green signal is dad. Okay. तो मम्मा के थ्रू जाता है, फिर then dad of course he's too busy to read the script, तो मम्मा उनको एक synopsis दे देती है कि ये. And then अभी तक तो ना ही चल रहा है except this one script. And तो फिर वो उस तरह जाता है, फिर then I read it myself. फिर that's how I read the script. Okay. When mama reads it and she's like yes, because I'm like पूरा script पढ़ के जब इजाज़त नहीं मिलनी तो क्या फ़ायदा? और दिल ख़राब हो जाएगा तो. Yeah, I get invested in the script and मम्मा says नहीं करना तो फिर. अच्छा, ज़ुबिया से कनेक्ट करती हैं आप किसी लेवल पे? कुछ है ज़ुबिया में जो आपको अपने जैसा लगता है और कुछ है ज़ुबिया में जो आपको फ्रस्ट्रेट करता है ज़ुबिया के बारे में? अच्छा, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे लिए इस कैरेक्टर में, क्योंकि पर्सनली सो when I think about Zobia, the first thing I'm like, you're so. क्या बेचारी के साथ क्या मसला है यार? Yeah, like no, she's just madly in love. So उसमें क्या खराबी है? उसका तो मसला नहीं है. फिर there's no issue between them, right? Yeah. It's not them. It's not them. See, that's what we're trying to target here. But let's come to that later. ठीक है, हाँ. I'll tell you what I connect with Zobia for. वो घर की लाडली है. मैं भी सही है. She's pampered and everything. So that is something I can personally connect to as well. Yeah. तो most of the times when I was doing some scenes जिसमें वो you know कुछ लाड करिए या कुछ इस तरह, I wouldn't have to act. I would just
think about it as my family and I would go ahead with it. तो वो वाला part it's very you know like वो मेरे से connect करता है. But then her being extremely gullible, then her being extremely madly in love, that I'm a very practical person, you know. I wouldn't do what Zobia is doing. So that frustrates you about her? Not frustrates me, I do understand. It's not me, but I do understand because there are girls like that who are not practical in love, you know. They are madly and crazily in love and that's about it, and they don't know anything. So आप जैसे मुझे होता है कि जब पता है कि इतना खतरा है, फिर क्यों गा रही हो, उससे मिलने कॉलेज के बाहर क्यों खड़ी होगी, इस तरह की चीजें आपको भी फ्रस्ट्रेट करती हैं? फ्रस्ट्रेट नहीं करती, या मतलब गुस्सा आता है? या गुस्सा भी नहीं आता, फिर क्या होता है? क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ. Okay, I understand this sort of, I empathize with the girl, ना. I empathize with Zobia because Zobia is crazy in love. तो even though there are a lot of restrictions, और वो जो restrictions होती है ना कि ये नहीं करना, इस एज में आपको अगर कोई कहे ये नहीं करना तो आपका अंदर से होता है क्यों यार? And there's no reason, there's no practical reason. They've grown up together. आपको क्या मसला है? You know, let them have fun. You know, let them at least be friends. You're restricting them so much. या तो बचपन से मना कर देते हैं. बचपन से आप एक लिमिट रखते हैं, बाउंड्रीज रखते हैं, तो डिफरेंट था एकदम से. वो फैमिली ने उसको टैकल नहीं किया सही तरह से. So I empathize with the girl कि अगर फैमिली बेहतर तरीके से डील करती, she's 19, she's 18, she's doing her best. So I empathize with her. I don't get frustrated, I don't get angry, I empathize with her. So Zobia क्या एक आम लड़की को रिप्रेजेंट कर रही है आपके जहन में? जब आप Zobia को प्लान कर रही थी, इन्विजन कर रही थी, जब सोच रही थी कि मैं इसको ऐसे परफॉर्म करूँगी, यू नो, इंसान सोच रहा होता है कि अच्छा ये मेरा कैरेक्टर है और ये लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे या मैं इन लोगों के लिए ज़्यादा कनेक्टेबल होंगी, यू नो. तो क्या जहन में आ रहा था? वो तमाम लड़कियों को रिप्रेजेंट करिए या सिर्फ उन लड़कियों को रिप्रेजेंट करिए जिनको मोहब्बत और फैमिली में कभी कभी यू नो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं? अच्छा, एट सम पॉइंट आई थिंक Zobia हर किसी से रिलेट, हर कोई Zobia से, हर लड़की Zobia से रिलेट कर सकती है, स्पेशली इन आवर सोसाइटी. Because you would be surprised how many times a girl would have to choose her family over her love. Or maybe any other interest, or any other education भी हो सकती है, any career भी हो other सकता है. self-interest. You said something very, yeah, बहुत सही बात You कही would be आपने. surprised to know the amount of girls who would have to put themselves second, third, or even below that to prioritize their family first. In the name of love and respect. Yeah. So way too many girls who would be able to relate. And then the love part. So many women, I met so many women who came up to me and like, ये मेरी story है. हाँ, seriously, पूछने वाली थी. So the other day when we were shooting in the guest house, there was a family staying there and they were also Pathan. तो मैंने उनसे पश्तो में बात करना शुरू कर दी. तो she was like, आपको अंदाज़ा नहीं है मैं इतना intently देख रही हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी story है. वो मेरे husband खड़े हैं. We've been through the exact same thing. Wow. And that hit me. That was like that. There I was like, हाँ मतलब मोहब्बत होती है, प्यार होती है, but there's somebody who's actually gone through this entire, you know, this entire like curve of their relationship and everything. So I was like, So मुझे लगता है Zobia और साइम की कहानी में ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेट कर सकता है. उनकी मुलाकातों से, उनकी मोहब्बत से, उनकी आपस की लड़ाई झगड़े से, मिसअंडरस्टैंडिंग से भी, यू नो. तो इसलिए मुझे लगता है कि और यंग फ्रेश लव स्टोरी है तो वो भी बड़े अच्छा लग रहा है देखने के लिए. और आई थिंक हर एज के लिए, एक तो टीनेजर्स के लिए ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू दिस राइट नाउ, बट फॉर एवरी एज, इवन आवर पेरेंट्स, बिकॉज उनको they'll go back into they go back in time and you know reminisce the memories कि अच्छा हमने भी ऐसे मोहब्बत की थी and we fell in love and we did this and we snuck out and we did this. I think it's for everybody. और मुझे ये भी लगता है शायद पेरेंट्स भी देख के सोच रहे हो, I'm really hoping, were you hoping कि ये ड्रामा एक तरह से पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है या जो अजम्पशंस हैं या जो मोहब्बत के नाम पे थोड़ा सा हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं बच्चों से, उसको ब्रिज करेगा, उसको चेंज करेगा? 100%. See, my main motive would be for, अच्छा, it's not just parents in this for me. For me, Zobia and Saim की भी बहुत गलतियाँ हैं, parents की भी बहुत गलतियाँ हैं. I need both the children and the parents to understand where to find a common ground. Okay. ये भी extreme है, ये भी extreme है. Find communication. Zobia क्या कर सकती है चेंज, आप ये बताएं आपके पॉइंट ऑफ व्यू में. So Zobia के हाथ में उतना नहीं है बिकॉज जो पेरेंट्स की एक मेंटालिटी है ना, बिकॉज वो एक कॉन्ट्रास्ट भी शो किया हुआ है फैमिलीज के दरमियान में. माई फैमिली इज वे मोर कंजर्वेटिव एंड स्ट्रिक्ट. और वो जब रिश्ता लेके आते हैं वो कह रहे हैं इनको गलत फहमी हुई है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सो दे आर कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू.
there's not much I can do, but so characters like Rushna, my sister, you know, they're the sober ones, they're the ones who are listened to, and you know, वो इस तरह थोड़ा सा. So I think elder sisters का बहुत important role, and I think Noreen, my sister, she's done it impeccably, the job, and the lines, the dialogues she has, right, they're really like सही है, बिल्कुल, proper उसको nail कर रहे हैं कि she's trying to manage both the family and the sister who's just trying to live her life, you know, and she's so young, she's so young and she's trying to live her life, she's going to experience things, let her. अच्छा, मुझे एक कंसर्न ये है, दानानी, जीना बुलाऊंगी मैं आपको, दानानी इतना लंबा मुझे लगे, जीना बुलाऊंगी, वो भी बहुत प्यारा नाम है. सो जीना, मुझे एक कंसर्न ये है कि कहीं हम ये तो नहीं बोल रहे कि यूथ में, मोहब्बत में, जब यंग लोग मोहब्बत करते हैं तो वो इतने इमोशनल हो जाते हैं, इतने जज्बाती हो जाते हैं कि शायद उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही नहीं हो, हम उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते. हम ये तो नहीं मैसेज दे रहे होंगे इस कहानी के थ्रू, क्योंकि ऐसा है नहीं. आजकल की यूथ बड़ी समझदार और मुझे लगता है बहुत सॉर्टेड है. तो अगर वो डिसीजन लेते हैं कोई, इवन इफ इट्स मैरिंग एट 19 years old, आई थिंक वो सोच समझ के ले रहे होंगे. देखिए, देयर इज ओनली सो मच सोच समझ के एट 19 years old, right? You really think so? I do. Don't you think so कि आजकल की जनरेशन is much more exposed and so much I'm more not mature? comparing the millennials to Gen Z because there's a huge technological gap. We were born into technology. They were and introduced conversations to it. are also different for you guys, na? Conversation, thought process, thinking, everything is different for us, right? But they're still 19. Okay. They're still 19, right? So they will make mistakes. Okay. Let's not put them on a pedestal. Let's not expect too much from them, even though they're Gen Z and they have a lot of exposure. They have the world in their palms. I understand all of that. But they're still human. They're still 19. They're still kids. They're still growing, experiencing things. I think वो एक margin हर इंसान को मिलना चाहिए, especially at such a tender age, no matter how much exposure, whatever you have. Let's not expect unreal. ठीक है. You know, let's not have unreal expectations from teenagers. So आपको लग रहा है कि अगर ऐसा हम मैसेज भी दे रहे हैं तो we are asking everybody to be careful about the decisions जो वो इस एज पे बना रहे हैं. देखिए, there's not much I can say because the story is going to unfold slowly and you'll find out जो भी जिस तरह भी हुआ है. But it's all balanced. Okay. जहाँ पे गलती हो रही है वहाँ पे उसका नतीजा भी दिखाएंगे. नतीजा भी दिखा रहे हैं, उसकी कंपनसेशन भी दिखा रहे हैं. अच्छा, उसने ज़्यादा गलत नहीं कर दिया साइम के साथ? किसने? मैं टीम साइम में हूँ इस वक्त. आप कैसे, मतलब सबके सामने बेचारे साइम को शर्मिंदा कर दिया. मैं बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ, बट इफ़ वी ट्राई टू एम्पथाइज विद ज़ूबिया फॉर अ सेकेंड हियर, हर एंटायर फैमिली इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर. Nobody knows what's going on between them except Rushna. Nobody knows. Her father, her mother, her Taya, everybody's really strict. They're all very conservative. So she doesn't have that sort of like an open-minded family like Saim does for them to understand if she says yes, and then they'll start speculating, and then it's gonna go down a rabbit hole for her, right? And at such a tender age, what do you expect? Like, I understand there's immense love between them, but Zobia के लिए her family matters a lot, right? तो वो और इतना pressure है family का, everybody is staring at her, right? Like you've seen the scene, ना? मतलब सब उसको देख रहे हैं. The Tayabu is saying, इनको गलत फहमी हुई है. Yes. कि बता दो इनको. Like they're all, look at what they're doing. They're making a fun out of you. तो वो आ भी उस angle से रहे हैं. तो she was under pressure. There was so much pressure. मैं खुद उससे empathize कर रही हूँ, right? Like there's so much pressure on that girl. अच्छा, मुझे ना बहुत interesting लगता है. I think the one thing that this drama is doing is creating conversations in the sense के जैसे भी आपने बोला है ना, मैं ज़ोबिया की point को भी समझ रही हूँ, और मैं ये और बड़ा अच्छा दिखाया है कि फैमिली बड़ी लविंग है. ऐसी नहीं है कि टॉक्सिक फैमिली है. जब उसकी तबीयत खराब होती है तो ताया भी आके पूछते हैं, अब्बा भी आके पूछते हैं. घर की लाडली है, सब उसको बहुत प्यार करते हैं. हाँ, लेकिन वो कंफर्ट नहीं है बच्चों का, कम्युनिकेशन नहीं है, बात कर सके. तो ये बड़ा अच्छा दिखाया. और ये बहुत, दिस इज अ वेरी प्रेवलेंट इशू इन द सोसाइटी कि प्यार की कमी नहीं है, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की कमी है. ये देयर विल बी सो मेनी चिल्ड्रन हु वुड बी एबल टू रिलेट टू दिस राइट नाउ कि माँ बाप प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ फील हो रहा है या इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, मैं उनको जाके उनसे बात नहीं कर सकूंगी. तो ज़ोबिया क्या जब कर रही थी आप, कुछ आपके कंसर्न थे कि ये मैसेज मैं ना दे दूं, या कुछ मैसेजेस आपको लग रहा था कि वो कैरेक्टर दे रहा है या दे रही है और आपने उसको निकाला, ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ? बहुत. आई थिंक आई रियली हैव टू क्रेडिट आवर डायरेक्टर शती भाई, बिकॉज
we sat down on the script so many times. The 4 scenes, we were like, I don't want to give this message. Okay. Like एक example दे सकते हैं? So like where her family is not listening to her, right? Zobia becomes very बदतमीज in the script. Okay. She actually बदतमीजी कर रही है. ठीक है. तो मैंने कहा कि I don't think this is justified because वो इससे इतना प्यार करते हैं. I understand frustration, but इतने प्यार में I don't understand बदतमीजी. कहीं आगे जाके अगर जस्टिफाई हुआ तो ठीक है, बट हर जगह पे यू कांट. आई डोंट वांट टू शो कि अगर अच्छा बात नहीं मान रहे फैमिली वाले तो आप बदतमीजी शुरू कर दो. आई डोंट वांट टू सेट दैट सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल फ्रॉम द कैरेक्टर. तो आई वाज लाइक जो भी हो, रिस्पेक्ट स्टेज रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग. अच्छा, और जीना मुझे ये लगता है कि उसकी वजह से देखिए अभी जो है ना हम लोग बीच में फंसे हुए हैं. हमें नहीं पता ज़ोबिया या फैमिली क्या करें. हम ऑफ कोर्स वी वांट ज़ोबिया टू बी हैप्पी एंड वी वांट के, लेकिन हम फैमिली को भी कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट नहीं जाए. लेकिन अगर ज़ोबिया बदतमीजी कर देती तो हम क्लियरली एक साइड पे हो जाते. वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में चला जाता. ज़ोबिया की जो सिंपैथी है ना वो हम शायद लूज कर दे. तो यू आर राइट, ये बहुत अच्छा आइडिया था एंड आई एम ग्लैड दैट यू गाइस डिड बिकॉज एंड आई एम आल्सो टायर्ड ऑफ सीइंग द नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी एंड बदतमीजी, क्योंकि हम लोग जनरली नहीं होते हैं ऐसे ना. और लड़कियां स्पेशली अपने माँ बाप से नहीं करती और करनी चाहिए भी नहीं. हमें यही दिखाना चाहिए. और मैं ये एग्जांपल नहीं सेट करना चाह रही थी, तो मैंने वो सारी बदतमीजी को टोन डाउन करके फ्रस्ट्रेशन में वो कर दिया, या सम सॉर्ट ऑफ लाइक एक एंगर आउटबर्स्ट, इवन दैट एक बहुत रिस्पेक्टफul मैनर में. बाइक पे जो राइड कर रही हैं, पहले कभी राइड किया है बाइक पे या दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू डिड इट? I've किया हुआ है, बट उसमें दिखाना था कि ज़ोबिया इज वेरी स्केयर्ड. आई वाजंट इन रियल लाइफ. आई एम नॉट एट ऑल. क्वेश्चन ही वो हो गया. मैं बचपन से बाइक चला रही हूँ. लाइक वी यूज्ड टू हैव डैड गॉट अस ई बाइक. वो नहीं होता, ओके, हां, बैटरी वाली जो बाइक्स होती हैं, स्कूटीज. ओके, I had that growing up. तो फिर तो कोई मसला ही नहीं हुआ. नहीं. और बचपन से साइकिलिंग किया कैंट एरिया में. हम रोज शाम को साइकिलिंग. तो फिर तो आराम से. वो सिर्फ कैरेक्टर में दिखाना था कि उसको डर लग रहा है, वरना मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. ओके, लेकिन वो उनके सीन्स बड़े मजे के हैं. ऊपर जो टेरेस के सीन है ना, मुझे इतना क्यूट लग रहा है बिकॉज हम ना रोमांस आई थिंक हम लोग क्रेव कर रहे हैं एज एन ऑडियंस. तो हमें प्योर इनोसेंट लव, हमें क्यूट मोमेंट्स मिल रहे हैं कि वो खाना छुपा के लेके एंड सच रियलिस्टिक थिंग्स एंड दैट्स व्हाट यू वुड डू फॉर समबडी यू लव एंड हार्ट वार्मिंग थिंग्स. जीना, यू नो, नथिंग व्हिच इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी. वो खाना बनाती है, प्लेट में ज्यादा डालती है कि ऊपर साइम के साथ भी शेयर कर सके. सो यू गाइस आर विनिंग आवर हार्ट्स फॉर श्योर. थैंक यू. बट मुझे बताएं, आर यू आल्सो अ चूड़ियां काइंड ऑफ गर्ल हु वुड वांट के चूड़ियां खरीद के लाओ मेरे लिए? पर्सनली जीना नहीं. मैं सोची थी यहाँ से हाँ में आंसर आएगा. नहीं. रियली नहीं. चूड़ियाँ इज वेरी लॉजिकल, टू इमोशनल. क्या है चूड़ियाँ? I think it's too cheesy. यार, चूड़ियाँ too cheesy. Seriously, it's the sweetest thing. It's sweet, but it's. So what would you choose? What would you want? बता दे. What would I want? हाँ. As in like from. Yeah, somebody who might be, you know, interested in you. I don't know. I really like. I love nature, so I would. Who? 100%. I love flowers. Okay. So, ek to flowers. I would just like really love spending time in the mountain with somebody I like, or like up the hill, or like hike up a mountain together, or something like that. Okay. You know, like anything that's close to nature. चूड़ियाँ तो नहीं है, चूड़ियाँ तो लिस्ट से निकल गई. Okay. वो गाना सुना है आपने? चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, साथी प्यार का मैंने चुन लिया. That song versus तुम्हें देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है पहला नशा. Which kind of love do you believe in or do you think you relate more to? क्या आवाज आई है, क्या बैकग्राउंड साउंड आया. वाह 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 वाह. मतलब कुछ पानी के गिरने की आवाज थी. ओके, हाँ जी. तो पहला सॉरी, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया. ये फॉर मी इट डिफाइंस बीइंग सोलमेट्स इन लव. और तुम्हें देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम इज मोर लाइक love at first sight. I think we're just gonna have to go ahead with this because इसका हम क्या कर सकते हैं? No, you guys should know. You guys should know where we are. हमारे questions के साथ यार. What's the वो अपना take दे रहा है ना. Oh, what is he saying? वो कह रहा है कि love is supposed to be practical. Oh, अच्छा अभी practicality को छोड़े, इसमें से बताएं क्या है दोनों में से? चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया. So you believe in being friends and soulmates and eventually. I believe in. For me, love is if I look in your eyes and I know what you're not okay. Oh. Or just what you're going through. To be able to understand somebody at such a deeper level that you look at them and I don't want to say it,
I don't see I don't know if this is a bit too old school or not, because aajkal communication and everything, I understand that, but for me it's just somebody who loves me so much and so deeply that they will look at me and be like, what happened, are you okay? Or you want ice cream, right? You know, something like that, something That's so less sweet, words, mashallah. more intentions. I think it goes with that कि because अगर आप किसी को इतना अच्छा जानते हैं और समझते हैं और connect करते हैं, आप तभी ये guess कर सकते हैं. So this implies that you have to have such a bond before you go into something where you just understand each other. True. You know? So not love at first sight. I don't believe in love at first sight at all. I think that's very superficial. What do you think खुशाल ने आंसर किया होगा इस सवाल का? I think he's also he doesn't believe in love at first sight. That's what I believe. That's what I know. I think. You know, I'm sure he believes in a deeper connection as well, from all that I know about him. So I think he also said something along those lines. He chose the other one. Love at first sight. Yeah. He's like, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, है ना, यही था ना? Yeah. Okay, but like, okay, fine. अच्छा, ये मुझे बताएं. I believe that या होता था ऐसा कि मोहब्बत जो है ना, उसमें आपको कुछ नज़र नहीं आता. यार चुप कर जाओ ना. What's wrong with you? Let us shoot. He's like, मुझे भी अपना time चाहिए, screen time चाहिए. No, he's not agreeing with our point of view on love. He's not. He's not. He or really she. isn't. We don't even know if Yeah, let's not judge the gender. Let's not. Okay, we're finishing. We're done with that conversation. करे 2 minutes, please. 2 minutes. So, जब आप प्यार करते हैं ना, मुझे लगता है कुछ नज़र नहीं आता. You just become madly in love with whoever that person is, you know. लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल की लड़कियाँ जो हैं, वो भी प्यार में ऐसी दीवानी हो जाती हैं या फिर practicality has now kicked in and decision making is more practical rather than just बस दिल की बात सुन लो. जैसे पहले होता था ना, रेड फ्लैग्स नज़र भी आते थे तो फिर भी आप जंप कर लेते थे और इस उम्मीद पे होते थे कि यार ये रेड फ्लैग्स ग्रीन हो ही जाएंगे. लेकिन अब क्या रेड फ्लैग्स को देख के यू टेक अ यू टर्न और व्हाट डू यू डू? I don't know about the general populace, but from what I know, awareness आ गई है काफ़ी. But I'm a little old school in this manner. थोड़ा सा जब मोहब्बत होती है ना, then you जब तक वो मोहब्बत है तब तक बुरा नहीं नज़र आता. पता नहीं क्यों. मतलब आप लोगों के यहाँ भी यही है अभी तक? यार मैं सोच रही थी you guys would be better than us. I think थोड़ा और टाइम के साथ हो जाएगा. But right now I feel like जितना भी आप practical कहने में बहुत आसान है कि practical और देखो अगर उसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जब मोहब्बत हो जाती है ना तो बुरी जो चीज़ लगनी होती है वो भी अच्छी लगती है. ये तो सही बात है. तो वो एक चीज़ I think regardless of whatever millennium we were born in, stays. मोहब्बत हो जाती है तो नहीं. अच्छा, ये बड़ा चीज़ी किस्म का इंटरव्यू है ना. थोड़ा वो ज़ूबिया के बाद भाई it's all about the drama is about love and you know a boy and a girl and you know dreams and all that. तो फिर ऐसे ही सवाल पूछूंगी ना, ठीक है? And I think audiences को मज़ा भी आएगा सुनने का. मुझे मज़ा आ रहा है इस conversation. This is the first time I've क्या आजा जाके लाऊं उसे. सो गोद में ले लो, फिर ले लो. मैंने ऐसे ही बोला था. She's actually gone to pick her up. She doesn't want to be part of the interview, जीना. मैं आराम से यहाँ बैठी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ. बेटा फ्यूशिया मैगजीन है. कभी ड्रीम किया, कभी सोचा? लड़कियाँ हैं, आई थिंक लड़कियाँ हर चीज़ के बारे में सोचती हैं. जैसे बहुत सी लड़कियाँ सोचती हैं कि मेरी मैं लव मैरिज करूँगी या मुझे ऐसा बंदा मिलेगा या मैं शादी पे ये करूँगी या मैं ये पहनूँगी. सोचा है कभी या नहीं? तो कभी सोचा है अगर मुझे कोई प्रपोज करे तो ऐसे करे? सच में मैंने जितना सोचा है वो ये सोचा है कि फिर बहुत पता नहीं, I don't want. हाँ, बोरिंग नहीं हो जाना चाहिए. हाँ, बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा, बट मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली बता सकती हूँ ना, मसाला डाल के नहीं बता सकती. मुझे ये है कि आपको पहले भी मैंने पिछले इंटरव्यू में यही बताया था. ऑल दैट आई हैव थॉट अबाउट मैरिज इज दैट अपनी खुशी के बाद पेरेंट्स, आई वांट माय फैमिली टू बी जस्ट एज हैप्पी विद माय मैन एज आई एम. वो तो इंशाल्लाह तो माय फैमिली इज अ बिग प्रायोरिटी फॉर मी, बिकॉज I can't be happy with somebody if I feel like there's a reluctance from my family. That is something that's
हाँ, लेकिन वो तो अलग बात है ना, वो तो बट सोचें अगर कोई प्रपोज करे तो क्या कुछ जहन में आ रहा होगा, कैसे करें? You want a very grand gesture, surprise, or very intimate kind of, you know? I think a bit of both. थोड़ा सा I wanted to be a little fancy, not fancy but grand. Okay. But I also wanted to be like very intimate, as in like कुछ ऐसा उसमें हो which is an ode to something, a memory of ours, or something that's very emotional, sentimental. ये ना हो कि बड़ी सी गाड़ी गिफ्ट कर दे, कुछ इस तरह, कुछ superficial गाड़ी के ऊपर एक छोटी सी रिंग पड़ी हो, नहीं वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. I want something that's a little grand but also very sentimental, so like a bit of both, I think. That's very interesting and a little difficult to pull off, I think. I mean, if somebody wants to get with me, they have to start making notes अभी से. भाई आप नोट्स की डायरी खोल लें और नोट्स लिखना शुरू कर दें. अच्छा, मुझे जब आपसे मैं फ़ोन में बात करी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. हम एक किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एंड शी सेड कि मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली घर वालों से. आई वाज लाइक सीरियसली? शी सेड हाँ, मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे ये बात इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि यू स्टिल आर लिसनिंग टू योर पेरेंट्स. आई नो स्क्रिप्ट ड्रामा इज़ अ लॉन्ग थिंग, वो छोटी सी चीज़ थी दैट यू वर सपोज टू डू, बट वो भी आपने नहीं की क्योंकि पेरेंट्स को मना नहीं किया, बट यू न्यू कि दे विल बी अनकंफर्टेबल, they wouldn't be happy. हाँ, ये कैसे आ रहा है बैलेंस इस एज पे जहाँ इतनी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट टू लिव विद दिस माइंडसेट कि नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया एंड यू वर हैप्पी, देयर वाज नो रिग्रेट इन योर वॉइस, तो ये कैसे बैलेंस ट्राई कर रही हैं? I think the entire credit goes to my parents because they have let me spread my wings and explore life more than I could have imagined. They've never stopped me from practically anything. उन्होंने हमारे लिए एक सर्कल बना दिया कि ये आपकी लिमिटेशंस हैं, ये आप नहीं क्रॉस कर सकते, इसके अंदर रह के गो क्रेजी, जो करना है करो, बट ये कुछ आपकी हुदूद हैं जिनको आपने क्रॉस नहीं करना. तो उनका इतना ट्रस्ट और फिर ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने कभी हमें ना, वो डंडे वाले माँ बाप नहीं थे हमारे. वी वर ऑलवेज फ्रेंड्स. ममा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मैंने भी एक इंटरव्यू में भी कहा कि आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड और बैड थिंग, आई शेयर एवरीथिंग विद माई मॉम. ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह. तो ममा के साथ एक ऐसा कनेक्शन है, तो और वो कुछ नहीं रोकती, जहाँ चले जाओ, एज इन दे शुड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. दो चीज़ें हैंड इन हैंड. ये ऐसे नहीं हो सकता, ये लेवल पे है. तो आई गिव देम ट्रांसपेरेंसी, दे गिव मी देयर ट्रस्ट. तो आप जो भी कर रही होती हैं आप बता देती हैं उन्हें, एज इन लाइक ये नहीं कि इतने बजे खाना खाया, साइकोटिक लेवल पे नहीं, दे नॉट उस तरह चोक होल्ड नहीं है माँ बाप का, बट उनको पता है इस्लामाबाद में हूँ शूट के लिए, स्केड्यूल पता है, कहाँ जा रही है, किसके साथ है, क्या कर रही है, एक है. और दूसरा सी, उन्होंने जो लिमिटेशंस हमारे लिए बनाई है ना, वो उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई. उन्होंने कुछ सोच समझ के, माँ बाप बहुत आगे का सोचते हैं, बहुत आगे का, जो हम नहीं समझ सकते. अगर हम इस एज में समझ जाए ना कि माँ बाप किस नीयत से हमें किसी चीज़ से रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, तो हम सेट हैं, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी. तो मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो कुछ बेहतरी समझ की, सोच के मुझे मना कर रहे होंगे इस चीज़ से, और अगर वो खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है. ज़िंदगी में किसी चीज़ से मना नहीं किया, तो अगर ये चीज़ से मना करें तो कोई तो वजह होगी ना. तो आई नेवर, और ऐसा भी नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट. कभी कभी होता है, गुस्सा आता है कि यार ये तो, आई मीन फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी ना, कभी कभी हो जाती है, बट वो भी एक नेचुरल कोर्स है ना, वो एक होता है. आई फील फ्रस्ट्रेशन होना नेचुरल है, एंड फॉर यू टू गो थ्रू दिस प्रोसेस इज नेचुरल एज लॉन्ग एज यू कम बैक टू अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड रियलिटी. वो तो परफेक्ट, आप कोई फरिश्ता तो है नहीं ना. एंड वही तो जिंदगी का मजा है कि थोड़ी बहुत फ्रिक्शन तो होती है. मम्मा के साथ काफ़ी दफ़ा बहस हो जाती है, यार आई मीन ये तो ठीक है, मम्मा कहती है बेटा नहीं. और कभी कभी ऐसा भी होता है, मम्मा को कन्विंस कर लेती हूँ, बिकॉज आई मीन माई पेरेंट्स वर नेवर वेरी विलिंग फॉर मी टू कम टू द मीडिया साइड. हमारी आर्मी का बैकग्राउंड है, फ्रॉम माई पेरेंट्स आर फ्रॉम पेशावर, तो वी नेवर इवन थॉट आई वुड बी इन मीडिया, राइट. तो जब अब कितने सारे लोग कहते हैं पर्ची, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग, राइट, माय फादर इज अ ब्रिगेडियर, कैसे पर्ची हो सकती है टू कम टू द मीडिया इंडस्ट्री, राइट. माय फादर वाजंट इवन लाइक, माय फादर 99% ऑफ द स्क्रिप्ट्स ही इज लाइक डोंट. तो कैसे, यू नो. बट जी ना, ये लास्ट टाइम ही हमारी बात हुई थी जब हमने इस टॉपिक पे बात की थी, एंड यू नो यू स्पोक अबाउट इट इन अनदर इंटरव्यू आल्सो. बट अब तक आपको बॉदर करती है ये चीज़? अब तक लोग लिखते हैं, मतलब पर्ची वाली उस तरह नहीं है, वो
शुरू में काफ़ी हुआ था, क्योंकि उस वक्त उस वक्त लोगों को इतना पता भी नहीं था एक वीडियो से आप किसी को क्या ही जान लोगे, वो एक परसेप्शन होती है ना, वायरल हो गई और ये सारा इस तरह, आप नहीं जानते किसी को until and unless you actually see some interview or you get to know that person. तो वो एक right off the bat एक आपका एक stigma बना हुआ है, तो that was attached to me. Okay. अब slowly when people see that I'm working and you know like they see some sort of credibility in my work and they're like अच्छा ये अगर वीडियो से वायरल हुई है but she can do something and she can pull something off, तो देखिए क्रिटिसिज्म चलता रहेगा. You can be Mahira Khan and still be criticized. True. तो अभी तक exactly. तो I focus. Tunnel vision. Good. Tunnel vision. अच्छा, एक और मुझे आपकी चीज़ बहुत अच्छी लगी थी जो आपने कहा मुझसे कि you said कि मैं खुद भी वो चीज़ नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने अपने लिए एक रास्ता सोचा है, मैंने कुछ चीज़ें जो मैं नहीं करूँगी, जो मैं नहीं करना चाहती. And this coming from you at this young age, literally मैंने उस वक्त भी मुझे स्ट्राइक की और फ़ोन रख के भी मैं सोच रही थी कि वाओ इट्स अमेजिंग कि आपको ये जो स्ट्रेंथ है ना और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बड़े एज के बाद आती है, एक्सपीरियंसेस के बाद आती है, और आप इस वक्त इतनी डिटर्मिनेशन से इस चीज़ को फॉलो करना चाह रही हैं. मैं जानना चाहती हूँ ये कहाँ से समझ आई है, ये आइडिया कहाँ से आया कि नहीं मैं हर चीज़ पे, हर बैंड वैगन पे ज्वाइन नहीं कर लूँगी, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँगी, कुछ चीज़ें जो मैं नहीं करूँगी. ये आपकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, और इज़ इट दैट यू फील यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज गर्ल जिनकी फैमिलीज़ उनको सपोर्ट कर रही हैं डिस्पाइट डिसएग्रीइंग विद देयर यू नो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है जो आप ये इस तरह सोच रही हैं? देखिए दिस डिडंट हैपन व्हेन आई केम इनटू द स्पॉटलाइट. रियली? अच्छा, ये ओवर द टाइम हुआ है. This has been going on for the longest time, as far as I can remember. So even when you were not a public figure? Even when I wasn't a public figure, I knew right from wrong. I knew कि अच्छा ये नहीं करना चाहिए. And that mentality came from the confidence and strength that my family has given me and what I expect from myself. I think बहुत important है, family, friends, आगे पीछे, company सब चलता है. But अपने लिए जो आप एक standard set करते हो ना, that is the most important thing. मैंने अपने लिए tunnel vision जो मैं आपको कह रही हूँ, सोच लिया है where I want to be, what I want to do. ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, but एक आपको general idea होना चाहिए कि आपने अपने आप को कैसे लेकर चलना है. Especially when you're in the public eye. You should know how you want to be perceived as. And then and that's why they have publicists in the West who work on image building, right? Because the artist wants to be perceived a certain way. But मेरे लिए this isn't, ये public figure बनने के बाद नहीं हुआ, ये हमेशा से था. Because I am very careful of the things that I do personally, generally as well. And that is how I want to be perceived as. And the standards that I have set for myself, they're not तारीफ करें. they're not pressured. फैमिली के प्रेशर की वजह से वो स्टैंडर्ड्स नहीं सेट हुए. इन्फ्लुएंस है बट मेनली खुद की वजह से कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, जितनी भी चाहे अट्रैक्टिव हो, जितने भी पैसे मिल रहे हो, जो भी हो, ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी. कुछ हार्ड डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ फ्लेक्सिबल डूज एंड डोंट्स हैं, जो जैसे आप माँ बाप से बात करके अम्मा ये तो सही है, मम्मा लाइक बेटा लाइक अच्छा देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा चलो अगर यू नो आपको पता है, आप भी आपको पता है. So those are flexible do's and don'ts. तो I know the hard ones and I know the flexible ones. Hard ones पे कोई compromise नहीं है. तो वो एक हर किसी को, I think ये जो लड़कियाँ देख रही हैं, लड़के भी, even everybody who's watching, I think everybody needs to set a certain standard for themselves and live up to it. सेट पे कोई इंसिडेंट हुआ, कोई मज़े की बात जो आप शेयर कर सकती हैं शूट करते हुए? सेट पे तो इतना कुछ हुआ है, I can go on and on about this. We've shot in -3 degrees. We've shot in God knows what conditions without any like sweaters or warmers or anything. जो छत वाला सीन मैंने शूट किया था, हमने शूट किया था, उसमें I was wearing शादी वाले कपड़े, तो अंदर कुछ वार्मर कुछ भी नहीं था, ना सॉक्स पहनी हुई थी, चप्पल पहने हुए थे. And it was -3 degrees in December on a rooftop, not even 1 hour away from Islamabad, so all up in the mountains. It's even colder there. And by the time we wrapped up, मेरे पाँव में जलन शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी. एक तो होता है ना,
आपको पाँव फील नहीं होते ठंड से, एक होता है जलन शुरू हो जाती है ठंड से, मेरे हाथों पाँव में जलन शुरू हो गई थी, एंड इट्स जस्ट मैडनेस ऑन सेट। me, Shadi Bhai, Khushal, we're like 3 children. When we get together, we're like 3 unsupervised crazy children. We're psychotic when we come together, and it's just madness. I'll show you some videos. Madness on set. Okay. अच्छा मुझे बताएं, how is working with Khushal? You guys have been friends for a long time. Yes, we go way back. तो कभी सोचा था कि खुशाल के साथ एक्चुअली ड्रामे में काम करूँगी? तो जब स्क्रिप्ट आया एंड यू फाउंड आउट कि खुशाल है, तो क्या रिएक्शन था? कॉल की उसको, क्या बोला? How did that happen? He was actually the first person I talked to about the script. It was very nice because एक दोस्त के साथ काम करना और आसान हो जाता है, और स्पेशली जब आप दोनों सेम कल्चर से हो, वो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग एक बन जाती है आपकी. तो it has been an amazing experience. Amazing, because ये मेरा पहली दफ़ा कोई रोमांटिक प्ले मैंने किया. पहला लीड पे तो वो अलग बात है, बट पहला जो मैंने थोड़ा सा पुश किया बाउंड्रीज को अपनी, और थोड़ा सा I went out of my comfort zone for this character. I'm sure. So I would not have been comfortable with anybody if it were any other way. But with him, एक off screen friendship ऐसी है, understanding ऐसी है कि वो इक नहीं हुआ. समझ आ रही है? अच्छा, मुझे हमेशा ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती है जब भी मुझे एक्ट्रेसेस बताते हैं कि वो वी आर सो कंफर्टेबल, वी आर सो सच गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर, कि जब हम रोमांटिक सीन्स करते हैं तो बहुत आसान होता है. मुझे आई फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू डू समथिंग, सम रोमांटिक सीन विद अ फ्रेंड, यू नो. अच्छा, फॉर मी, बिकॉज आई एम वेरी रिजर्व्ड टू पीपल हु आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, इस तरह. तो उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड था कि हमें पता था कि ब्रो इजी, कुछ गलत मतलब में नहीं होगा. एग्जैक्टली. ओके. तो जो भी कर रहे हैं इजी है. समझ आ रही है? उस तरह बहुत भी इंटेंस सीन है ना, तो जो एक कट हो क्या निकल, इस तरह का. यू अंडरस्टैंड दैट सॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्रो बॉन्ड, कि यू नो लाइक मुक्का मार दिया या धक्का दे दिया, कुछ इस तरह, यू नो, कुछ इक्की और वो नहीं हो जाता था कि ओ यू नो लाइक रोमांटिक, कुछ ऐसा नहीं हुआ. कट हुआ, उसी तरह ही वापस बातचीत शुरू, लाइक यू नो, निकलो यहाँ से, stuff like that. But how is working with Khushal? How is he on the set? How is he as an actor? I can go on and on about this. मेरा इतना नहीं एक्सपीरियंस काम का, बट जितना मेरा है, I have never seen anybody this dedicated in this industry. Okay. He does not sleep at night. He's reading scripts, he's making notes, he has, हर सीन में कुछ डिफरेंट करेगा. हर कैरेक्टर में कुछ अपना टच लाएगा. He will go above and beyond for his characters. The choices he's made in his career regarding scripts has been great so far. The amount of time, hard work, or niyat, because he's so dedicated and he's so hardworking. He is so hardworking. He will go above and beyond to execute his vision that he has for a character. So when you have somebody like this against you, as in like opposite you, it motivates you, yaar. You're like, it makes you want to do more. You know, you're like, it's sort of like a motivation for you कि यार ये इसने इतना क्या, मैंने भी करना है. इतने सारे scenes हैं where he's like fallen off something and कुछ चोट वोट लग गई, तो शुरू में I was a little hesitant. उसको देख के मैं ऐसे जगहों से गिरने लगी. I have bruises on. हाँ, मैंने सुना आपको बहुत चोट लगी है. अभी भी यहाँ मुझे उस दिन घुटने में चोट लगी है, because I had to do a scene उसमें मैं गिरी हूँ टेबल से टक्कर खा के, spun and fell on the floor. तो यहाँ भी लग गई, यहाँ इतना मोटा ब्रूज है यहाँ पे. तो वो एक चीज़ होती है ना, when you learn from your co-actor. This is something I've learned, to go above and beyond for your character. आजकल रिलेशनशिप्स में आपको क्या रेड फ्लैग्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गाइस, जो आपके मुताबिक रेड फ्लैग्स होते हैं? Biggest red flag right off the bat, and not just for our generation, for any before us or for coming, is lack of respect. आपकी रिलेशनशिप में लव से ज़्यादा, फन से ज़्यादा, एडवेंचर से ज़्यादा, द टॉप थिंग दैट शुड बी इन योर रिलेशनशिप इज़ रिस्पेक्ट.
अगर दो इंडिविजुअल्स के दरमियान रिस्पेक्ट नहीं है तो आई डोंट, लव डजंट काउंट, फन डजंट काउंट, नथिंग काउंट्स इफ देयर इज नो रिस्पेक्ट. सो एक दो क्या एग्जांपल्स अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ या आपने सुना या आपने देखा, ये चीज़ें थी जो बज़ाहिर लग रहा है कि ओके हैं, बट एक्चुअली मुझे ये चीज़ आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लड़कियों को समझ नहीं आती है, इनफैक्ट कभी कभी मैं कहूँगी लड़कों को भी समझ नहीं आती है जीना, एंड यू माइट एग्री विद मी, जो एक्चुअली जब आप हो जाती है ना बाद में सोचते हैं कहते यार ये कुछ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को आदत हो गई है, हमने उसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया कुछ चीज़ों को. कोई एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकें, आपके जहन में इस वक्त आ रही हों जो. I mean, as girls and women, you would also know so many examples around us of women being violated mentally, physically, and not understanding because एक उस चीज़ का एक इतनी अवेयरनेस नहीं है to understand your own boundaries. एक स्पेसिफिक अगर हम एक दो चीज़ों की बात कर सकें, जैसे मुझे लगता है कि कई दफ़ा टोन ऐसी होती है, इम्प्लाई करे होते हैं ओह you're a woman, that's why you're saying that. Oh, so like being like patronizing, you know, अगर मैंने कुछ सवाल पूछ लिया, हाँ, अगर सवाल मुझे कैसे पूछा आपने? सबसे पहली बात तो I love playing football. What team do you support? अच्छा, इस टीम ने इस साल में कितने गोल्स किए थे? अच्छा, इस टीम में कौन कौन है? So just like this sort of like a condescending, patronizing तरीका of asking a woman about things that usually men do is not okay. अगर जैसे मुझे कोई लड़का कहे कि मुझे कुकिंग पसंद है, अच्छा क्या बना लेते हो, रोटी गोल बनानी आती? नो, यू नो लाइक उसको पसंद है तो उसको पसंद है. ये जेंडर बेस्ड थोड़ी है, लड़कों के लिए फुटबॉल थोड़ी बना है, औरतों के लिए खाना बनाना थोड़ी बना है. और वो स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है कि वो मैंने शो मारने के लिए ऐसे नहीं बोला, मैं एक्चुअली इसको पसंद करती हूँ. मैंने उस दिन मेरे साथ हुआ है पर्सनल एनेक्डोट. I love driving. Absolutely love driving. It's a form of therapy for me. Yeah. मैंने किसी को बताया, somebody asked me, a friend of mine, like, driving आती है? Like, हाँ आती है. Like, अच्छा. I'm like, I love driving. It's very therapeutic for me. And they're like, हाँ अच्छा. In a very condescending manner, because of which मुझे उनकी गाड़ी चला के उनको दिखानी पड़ी कि मुझे गाड़ी चलानी आती है और काफ़ी अच्छी गाड़ी चलानी आती है. तो ये छोटी सी चीज़ है, बट इट इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एज अ वुमन कि यार मुझे क्यों प्रूव करना पड़ा है कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन. आई शुडंट हैव टू प्रूव सच इटी बिटी थिंग्स. तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है. वर्क स्पेसेस में कितना होता है. इंडस्ट्री में फेस करना पड़ता है आपको ऐसी कोई चीज़ अभी तक किया है? मेरा इतना इंडस्ट्री से उस तरह का एक्सपोजर नहीं रहा जहाँ पे आया. लेकिन रिसेंटली तो 4 साल में 3 साल में 3 साल हो गए. 2 साल बट रिसेंटली 2 साल में यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ लाइक नॉट प्रोजेक्ट्स बट यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद द इंडस्ट्री इन सम वे और द अदर, राइट? सो आई डोंट नो, मेरा पर्सनली नहीं, आई डोंट वांट टू मेक समथिंग अप. मेरा पर्सनली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ. यू बीन हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव बीन? या मुझे लगता है कि you set a tone for yourself on how you want to be treated, you know, but some men don't care. But alhamdulillah I have been very lucky in this regard कि मुझे इस तरह का कोई condescending उस तरह remark नहीं. I have been lucky alhamdulillah. Okay. Surprisingly. माशाल्लाह से. कोई fan reaction है जो बता सकती हैं अभी ज़ूबिया के साथ? कोई मैसेज कुछ आया? So there was this DM that I was reading this one time. एक मैंने question sticker डाला था, तो उसमें responses आए थे, तो I was reading those responses, and there was this girl who was like, I really resonate with your story because I am Zobia. She was going through the exact same thing right now that Zobia is going through in the drama. She's in love with this guy, but her family has some problem with the guy. There's no logical reason for it, and she's stuck. तो कह रही है मुझे इतना प्यार है उस लड़के से, लेकिन मेरी फैमिली के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकती. मैं देख के रोती हूँ. मैं वो एपिसोड देख के रोती हूँ क्योंकि तकलीफ दे चीज़ है कि आपको यू हैव टू चूज़ बिटवीन योर फैमिली और द पर्सन यू लव, एंड देयर इज़ नो प्रैक्टिकल लॉजिकल रीज़न फॉर इट. अगर हो ना कि कुछ रीज़न बनता हो, तो ये चीज़ बहुत इंडेयरिंग. सो व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर एंड कुछ नहीं कहेगा. ज़ैफ़ा तुम्हें पता है और तुमने कुछ बताया भी नहीं? कुछ नहीं कहेगा. सॉरी कहानी के आप कंटिन्यू करें. इट्स ओके. कुछ नहीं कहेगा. इस तरह की रियल लाइफ स्टोरीज कम टू यू एंड देयर लाइक ये हमारे साथ हुआ है, दैट हिट्स यू कि ओह वाओ, पीपल आर पर्सनली कनेक्टिंग. दिस वाज वेरी इंडियन. और खुशी भी होती होगी ना कि यू आर यू नो representing and you know people are connecting. बहुत क्या बोलो अपने अम्मा पापा को ये ड्रामा दिखा.
शायद उन्हें कुछ समझ आ कुछ ना जाए, कुछ समझ आ जाए। या भी बोलेंगे देखा सही किया हमने, ये भी देखो ऐसे ही माँ बाप होना कैसे चाहिए, उसको वो कर हाँ। रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank जीना, you so much for this. एंड इट वाज लवली। हम आ गए, कर लिया हमने। Yeah. आई स्टिल कांट बिलीव वी हैव डन इट। I still मैं can't पता नहीं believe it पूरे दिन either. में मैंने ये लाइन कोई 10 दफा बोली। आई स्टिल कांट बिलीव आई हैव डन इट। And we've done it in mountains. या और हम On इतना a- भाग रहे थे, यू गाइस हैव नो आइडिया। हम Of इतनी the- 2 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं, कभी खुशहाल ऊपर is गए, also with us, हाँ, Yeah. एक जगह गए वहाँ समझ नहीं आ रही, बिकॉज आई वाज लाइक अब अगर हम आए तो हमें थोड़ी सी तो पाकिस्तान फिर की हमें ब्यूटी जाते दिखानी जाते चाहिए कहीं ना। कोना मिला, हाँ। तो भाग अच्छा, के जब जा रही थी तो मुझे ये पत्थर नजर आए थे और मुझे याद थे। अब मैं वापस आ रही हूँ, पत्थर का आ नहीं रहे। On top of it, that Gina and Kushal are constantly talking in Pashto. And I'm like, guys, I am also. Oh yeah. दो लफ्ज उर्दू इंग्लिश में, फिर दोबारा पश्तो। मैंने कहा वो ऑटो पे चला जाता है ना। when you're anybody जो पठान देख रहे Yeah. होंगे उनको पता होगा, जब किसी I पख्तून के know, साथ आप I मिलते हो know. तो वो एक ऑटो पे चला जाता है आपका रिस्पांस पश्तो में। Yeah. तो वो अपने आप को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है कि ओह सो इस पूरे प्रोसेस के पीछे बहुत मेहनत लगी है, बहुत पसीना बहा है, बहुत भाग दौड़ हुई है, बहुत प्लानिंग हुई सो है। आई होप दिस गोज वेल एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस एंड यू गाइस। अब क्या आवाज दोस आ आर रही है? बग्स, बीटल्स। इतनी ज्यादा आवाज? हाँ. वाओ, आज That's, मैं तो पता नहीं क्या क्या नई चीज़ें डिस्कवर कर रही हूँ। हाँ, ओके, सो कमिंग बैक टू यू, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस Thank you आउट for विद दिस। coming all the way, man. Thank you for taking a leap of faith, नहीं coming यार, all you- the way from Karachi, driving to Yeah, Dadar yeah. in these rocky mountains where Yeah. there's barely any internet or anything. But you also help ना, you like हाँ आ जाओ, ये कर लो, Of वो कर लो। course, I If you wanted had to- not done it, then I would not have taken this jump, नहीं, honestly. I wanted you to, I wanted Yeah. this to happen. Yes, and finally it's happening. I'm so happy. कुछ थोड़ा different हमने Yeah, स्टूडियो से निकल के चीज़ की है ना। exactly. So Zobia is making us all think and conversations बहुत सी हो रही हैं. So I hope आपको अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। कोई और है स्क्रिप्ट जिस पे आप पढ़ रही हैं या भी सिर्फ फोकस इज ऑन मोहब्बत? Focus is here, MGM. but there's a couple of scripts that I'm considering. Okay. So I don't want to come out of this. Yeah, true. I want to stay here, focus here, and then go. Yeah, अभी तो ड्रामा शुरू, अभी तो ड्रामा चलेगा अभी। Yeah. Yeah. चले, you take care and we wish you all the best. Thank you so much. Likewise.